आपकी हनीकॉम इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री के क्वेश्चन आंसर्स को जानेंगे। उससे पहले एक करेक्शन करना चाहूँगी। हमने पिछली वीडियो में इसका मीनिंग भी जान लिया था, रीडिंग और मीनिंग। सो एक करेक्शन करना है। तो ये जो लाइन थी डैड लैंडेड वेल ऑफ जो था ये नॉक डाउन विद फोर्स, लैंडेड आ गिरे, वेल ऑफ बहुत ज़ोर से। तो ये थोड़ा इसका जो मीनिंग है वो नीचे हो गया, लेकिन डेक का मतलब पड़ता है फर्श, बैक ऑन द डेक, यानी कि फर्श पर पीठ के बल वो बहुत ज़ोर से आ गिरे। तो नॉक डाउन विथ फोर्स जो है वो वॉल अप, जैसे हम वॉलेट कहते हैं तो वॉल अप यानी कि बहुत ज़ोर से गिरे, लैंडेड आ गिरे, यहाँ पर ये मीनिंग था। और एक और करना चाहूँगी कि स्मग यानी कि कंफर्टेबल, जो यहाँ पर है ये है स्मग यानी कि कंफर्टेबल, सहज थी, आराम थी। सेफ एंड साउंड जो है एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है फ्री फ्रॉम डेंजर, यानी कुशल एवं स्वस्थ। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। वाई वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल? डैड जो थे, पिता जो थे, वो विश्वस्त क्यों थे कि वो नहीं गिरेंगे? डैड वॉज श्योर he wouldn't fall because he was overconfident of his expertise in climbing up a tree। तो अपने पेड़ पर चढ़ने की जो विशेषज्ञता थी उसके प्रति वो अति आत्मविश्वासी थे। विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट? कौन सा जो वाक्यांश है वो कविता में जाहिर करता है पिता के सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो आत्मविश्वास को बेस्ट, सबसे अच्छा। द फ्रेज जो है वो अ क्लाइंबर लाइक मी एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। तो जो प्लान ए था और उसकी जो परिणाम थे वो क्या थे? प्लान ए वॉज टू क्लाइम द ट्री यूजिंग अ लैडर बट द लैडर स्लिप्ड एंड डैड फेल इनटू द फ्लावर बेड। लेकिन जो लैडर सीढ़ी थी वो खिसक गई और पिता जो थे वो फूलों की क्यारी में गिर गए। प्लान सी वॉज अ सक्सेस, प्लान सी सफल था। व्हाट वेंट रॉन्ग देन? तो फिर क्या गलत हुआ? तो प्लान सी वॉज सक्सेस बट इट वेंट रॉन्ग एज डैड लैंडेड राइट ऑन द कैट। ठीक बिल्ली के ऊपर वो गिरे, विच येल्ड एंड एस्केप्ड बट डैड गॉट स्टक दियर, जो कि चिल्लाई और भाग गई वहाँ से, लेकिन पिता जो थे वहाँ पर फंस गए। कैट वॉज वेरी हैप्पी, बिल्ली बहुत खुश थी। टू बी ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर आकर। पिक आउट, चुनो। द फ्रेज, वाक्यांशों को। यूज्ड टू एक्सप्रेस, जाहिर करने के लिए प्रयोग किए गए। दिस आइडिया इस विचार को। तो दो है उसमें, प्लीज्ड एज पंच और सेकंड है स्मग, स्माइलिंग एंड स्मर्किंग। डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन, तो बिल्ली और पिता जी की परिस्थिति का वर्णन करो। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, एंड एट द एंड ऑफ द पोएम, और पोएम के अंत में। इन द बिगिनिंग द कैट वॉज इन ट्रबल एज इट वॉज ट्रैप्ड ऑन ए ट्री बैंड, तो पेड़ की शाख में वो फंस गई थी। डैड मेड 3 अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू इट, पिता ने उसको बचाने के 3 प्रयास किए। हु देन स्प्रैंग टू द ग्राउंड सेफ एंड साउंड, जिससे वो क्या हुई, ज़मीन पर सुरक्षित आ गई। नाउ इट वॉज डैड, अब पिता थे। हु वॉज स्ट्रक अप इन द ट्री, जो कि पेड़ में फंस गए थे। नाउ द 7th क्वेश्चन, यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम अपने आप कर सकते हो। कि व्हेन, वाई एंड व्हेन, क्यों और कब पिता ने कहा इन शब्दों को। फिर 8th है, डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस, क्या तुम कविता को ह्यूमरस यानी कि बुद्धिमानी से भरे हुए या मतलब चातुरी से भरे हुए पाते हो। रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ, उन लाइनों को पढ़ो जो कि तुम्हें हंसाती हैं। तो yes, the poem is certainly humorous. The following line make us laugh. Yes, so it is smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad's still stuck tree. So thank you for watching. आशा है आपको करेक्शन कर लेंगे, वो थोड़ा गलत हो गया था, तो sorry for my mistake. Now we will learn 8th lesson, fire, friend and foe. Fire is both useful and dangerous. What is fire? How did we discover it? How do we control it? Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened.
Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. Three things are needed to make fire: fuel, oxygen, and heat. Wood, coal, cooking gas, and petrol are some examples of fuel. Oxygen comes from the air. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. The the third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. We generally do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point, or kindling temperature of the fuel. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter, and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also destroyed, and hundreds of people are killed or injured. Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed for burning is taken away. For example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. The third way of putting out a fire is to remove the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen, and the fire is extinguished. Some fires cannot be put out with water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. The person spraying water
might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. Long ago, there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. People formed human chains, they still do if required, and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effect of smoke. The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. So, thank you for watching. Please like, share, and subscribe.